This conference will now be recorded. शाहे करीम अल अकरम, 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 शाहे करीम अल अकरम। शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। या अली मदद अजीज सर, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद sir, welcome back sir. thank you या अली मदद, या अली मदद। तमाम दोस्तों को या अली मदद, it's nice to be back. Good to see you sir. Thank you, it's nice to be back. शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। या मौलाए मेहरबान, या मौलाए मेहरबान, तेरे बड़े एहसान आते हैं हम पर मौला। या मौलाए मेहरबान, तू ही हमें इतनी हिम्मत और तौफीक इनायत फरमाता है कि जिससे हम गरीबों को ये ताकत मिलती है कि हम कुछ इल्मी काम कर सके, जमात के लिए, दोस्तों के लिए, भाई बहनों के लिए मौला। या मौलाए मेहरबान, तेरे एहसानात हो गए हैं हम पर बेशुमार। या अली अल्लाह, अब कर एक और एहसान अजीम हम गरीबों पर। या मौलाए मेहरबान, तौफीक, ताईद, हिम्मत व यारी, तौफीक, ताईद, हिम्मत व यारी। तमाम साथियों को एक बार फिर बहुत ही आजिज़ाना या अली मदद कबूल हो। अली मदद, या अली मदद। आज हम कलाम इमाम मुबीन फरमान नंबर 26, we will start with the फरमान number 26 from the कलाम इमाम मुबीन. This is the फरमान, a continuation फरमान from the previous one.
in which our beloved Hazrat Imam Aka Sultan Muhammad Shah Salawatullah alayhi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad, may our soul be sacrificed to their Imam. फरमाते हैं सुबह हम सिद्धपुर जाएंगे, इसलिए तुम्हें काफी दिनों तक नहीं देख सकेंगे। इंशाल्लाह हमारा ख्याल तुम्हें थोड़े फरामीन फरमाने का है जिनको तुम बराबर याद रखना। फिर मौला फरमाते हैं 2 रात पहले हमने तुम्हें फरमाया है कि खुदा की इबादत बंदगी करो, तो शैतान तुम्हें नहीं लूट सकेगा। दोस्तों को याद होगा इबादत बंदगी, इबादत इत्तेहाद से आया है, बंदगी गुलामी से। इबादत, द वर्ड इबादत, फॉलोइंग, सबमिटिंग, बंदगी, slavery or service. When we think of ibadat and bandagi, normally, usually, our mind goes toward the 4 o'clock Baitul Khiyal bandagi. जब हम इबादत बंदगी के अल्फाजों को सुनते हैं तो अक्सर हमारा माइंड, हमारा ख्याल सुबह की 4 बजे की बैतुल ख्याल की इबादत पर जाता है, लेकिन वो दुरुस्त तो है, मुकम्मल नहीं है। क्या मतलब कि वो अल्फाज और वो ख्याल दुरुस्त तो है लेकिन मुकम्मल नहीं है। आज हम उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। Today, let's talk about this once again. Even though when we think of ibadat bandagi as a 4 o'clock Baitul Khiyal ibadat, even though it is true and correct, but it's not a complete understanding. And let's talk about this once again to ensure that we understand the words that Imam is using in his Farman, because it holds multiple interpretation and it holds multiple symbols. जब इमाम ये अल्फाज अपने फरहामीन में फरमाते हैं तो वो एक तरफ इशारा नहीं बल्कि बहुत सारी जगहों पर इशारा फरमाते हैं। मौला फरमाते हैं कि अगर आप इताअत, सर्विस और बैतुल ख्याल की इबादत करोगे तो तुम्हें शैतान नहीं लूट सकेगा। शैतान will not be able to bother you or take advantage of you. So let's take as example a scenario कि एक आदमी कि जो सुबह को 4 बजे की इबादत तो करता है लेकिन इमाम की फरमान बरदारी, इताअत और सर्विस, स्लेवरी, गुलामी नहीं करता है तो उसको शैतान उसका ईमान लूट लेगा। किस तरह से लूट लेगा? वो उसको उसी नुक्स से, उसी शॉर्टकमिंग से, और वो क्या शॉर्टकमिंग थी? उसकी ना फरमान बरदारी, उसकी ह्यूमिलिटी, लैक ऑफ ह्यूमिलिटी, उसकी सर्विस ना, उसकी गुलामी नहीं होने की वजह से उसके अंदर जो कमी होगी वो उसको लूट लेगा और उसको सिरातुल मुस्तकीम से हटा देगा। हालांकि वो इबादत कर रहा था
उसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे पास है, बहुत बड़ी एग्जांपल, और वो इब्लीस है। इब्लीस ना सिर्फ पढ़ा लिखा था, बल्कि उसने बहुत ही इबादत की थी और वो बहुत ही बुलंद मकाम पर पहुंचा था। मगर ना फरमान बरदारी की वजह से जब खुदावन ताला ने हुक्म फरमाया कि तुम आदम को सजदा करते हुए गिर पड़ो, तो उसने इस फरमान को नहीं माना। क्या नहीं किया उसने? उसने इत्तेहाद नहीं की। क्या नहीं किया उसने? उसने इबादत नहीं की, क्योंकि इबादत का मतलब इत्तेहाद होता है। क्या नहीं किया उसने? बंदगी नहीं की, उसने गुलामी नहीं की, उसने सर्विस नहीं दी, क्योंकि गुलाम का काम होता है कि जो मालिक फरमाए, जो मालिक फरमाए वो करना है, उसके अंदर बट्स एंड इफ्स नहीं होता है। What did Iblis do? Even though he had done the ibadat and he had done ilm, lot of ilm, but when time came, he did not follow the farman of Allah by prostrating to Adam. He did do ibadat, the char baje ki ibadat. He did read lot of books, but when time came for ibadat, the ittihad, ibadat, the following submission, he refused to obey the फरमान. और फरमान क्या था? इत्तेहाद करने का फरमान था, झुक जाने का फरमान था. So you see that when we read the फरमान and when we come to the words like ibadat and bandagi, we must understand as a whole, not as a limited translation or limited understanding. Because if we do that, there is a chance that we may be doing a Baitul Kal Ibadat without following the Farman, without bandagi, meaning without the service or the slavery. Because a slave that we are, we're supposed to follow every single farman of the Imam. A slave cannot say that, oh my Lord, oh my master, I like this farman, so I will follow. I don't like this farman, so I will not follow. This farman is convenient for me, so I will follow. This farman is not convenient for me, so I will not follow. So you see that understanding the farman is very, very important. Otherwise, even when we think that we are doing a right deed, a righteous deed, it may not be 100% correct. फरमान को जब हम नहीं समझते हैं या अधूरा समझते हैं, तो उसमें इस बात का खतरा रहता है कि हम फरमान तो मान रहे हैं लेकिन पूरा नहीं मान रहे हैं, 100% उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं ना समझी की वजह से. और यही मकसद था हमारा यहाँ पर जमा होने का. Today's session, the purpose of today's session is to understand the Farman correctly and completely. Correctly and completely. अधूरा नहीं. So let's move forward. शैतान तुम्हें नहीं लूट सकेगा. शैतान, he attacks human from within and from the outside. How does he attack? He finds a shortcoming
in the मोमिन, जो भी उसके अंदर एक खराबी है उसको लेकर वो उसके ऊपर अटैक करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के दिल में लालच है तो वो लालच को लेकर उसको अटैक करेगा। किसी के अंदर सुस्ती है तो सुस्ती को लेकर उस पर अटैक करेगा। लेजीनेस, if someone is lazy, then shaitan will attack using their laziness in the moment. If moment is greedy, then he will attack that. If moment lacks the knowledge, he will use that channel to attack him. So इमाम फरमाते हैं कि एक मोमिन को कैसा होना चाहिए कि जो पूरी इत्तेहाद और इबादत बंदगी के साथ होगा तो शैतान कभी भी उसको लूट नहीं सकेगा। ये फरमान पहले भी फरमाया है, इंशाअल्लाह तुम भूल नहीं जाना। मौला warned us that do not forget this फरमान। तो जमात को फरमाते हैं कि अपना दिल साफ रखो ताकि शैतान लूट ना ले। Keep your heart pure, and we have talked about this. How do we keep our heart pure? It cannot be just that we wash away like we wash our clothes, or we wash away like we wash our body. Keeping the heart pure takes intentional practice, a conscious effort. दिल को साफ करना और उसको साफ रखना एक प्रैक्टिस के साथ और एक सोच के साथ हम रख सकते हैं, वरना ये कोई कपड़े नहीं है कि जिसको हम धो डालेंगे। कपड़ा धोवे सो क्या, दिल धोवे सो पावे। उसके पीछे एक और बात नाचीज आपको बताना चाहता है कि किस तरह से दिल को साफ करना है। अपने दिल से दुनिया की लालच को, दुनिया की चाहत को निकाल दे। I would like to share one more thing regarding cleaning our heart and mind, and that is to remove the greed of the world, remove the want of the world from your heart. Bring the world to a minimal, a minimize कर दें दुनिया की चाहत को और दुनिया की नीड को। I'm not saying that do not live well, do not live comfortable, do not eat good. I'm not saying that. But keeping your heart clean, pure of the worldly greed, worldly wants, need is in its own place. We need to eat. We need to do a lot of other things like worldly work. But greed and want is not your friend. आपको बहुत सारी चीज कर सकेंगे आप, लेकिन उसकी कांस्टेंट चाहत कि एक कपड़ा है तो दूसरा लेना है, एक जूता है तो दूसरा लेना है, छोटा घर है बड़ा घर लेना है, एक दुकान है दो दुकान लेनी है। लालच, the greed. If you have the worldly greed in your heart, you yourself by default is pushing the imams away from your heart. अगर आपके दिल में दुनिया
कपड़े, लत्ते, बिजनेस और पैसे, इसकी लालच है आपके दिल में, तो फिर आप खुद ही इमाम को अपने दिल से निकालते हैं, इमाम को जगह नहीं देते हैं कि इमाम आपके दिल में आकर बैठे। थिंक अबाउट दैट, एनालाइज योरसेल्फ। आप सोचें और अपने आप को पूछें और अपनी हरकतों को देखें। आपके क्लोजेट के अंदर एक नजर करें, आपके घरों के अंदर एक नजर दोहराएं, तब आपको एक अंदाजा होगा कि जाने अनजाने में हमारे दिल के अंदर दुनिया की कितनी लालच है, दुनिया की कितनी तमन्ना है। हम वांट्स को फॉलो करते हैं या नीड को फॉलो करते हैं? Look around yourself. You don't have to ask me. You do not need to tell anyone. You be the judge of your own soul, your own mind. Try to decrease the wants. Try to eliminate the greed in your heart. मारू मारू करता जीवन बिताया. I want this, I want this, I want this. This want have destroyed your life, your janam. This world is temporary. What you see around you physically is temporary. It's temporary. It's not permanent. Let's focus toward what is permanent. And only way we can do that if we decrease our thoughts toward the temporary. दुनिया की लालच से जब हटाएंगे हम अपने ख्याल को, अपने दिल को, तो इंशाल्लाह हमारी तवज्जो, our mind, our attention will be on the permanent, and that is your soul. The permanent home is not here. This is not the permanent home. We do live in this home, no doubt. We need to live our life, no doubt. And no one is asking you not to. But as need, not as want. आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को कि need और want क्या है? चलें आगे चलते हैं. मौला फरमाते हैं, तुम जमात को फरमाते हैं कि अपना दिल साफ रखो ताकि शैतान लूट ना ले. तुम्हारे दिल में बादशाह के बैठने की जगह है, वहां शैतान को जगह ना दो. You see, we just talked about that. Your heart is a place for the imam to sit, not the shaitan. अपने दिल में इमाम को बिठाओ. शैतान बहुत सारे अलग अलग रूप में होता है. वो दुनिया की लालच के रूप में भी होता है, दुनिया की वांट के रूप में भी होता है, और बहुत सारी जो चीजें जो जिसको हम बोलते हैं कि मैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. शैतान हर चीज के अंदर आपके दिल में आके बैठ जाता है. मौला से आपका दिल जो है वो इमाम के बैठने की जगह है, शैतान के बैठने की जगह नहीं है. How simple Imam can use his word. Imam has given us this Farman as children. He had made it very, very simple. Follow or not to follow is definitely depending on us.
with our free will. Further, Mola says, हिम्मत करो और सच्चाई से दुनिया और दीन का काम करो. Be honest in your deen and dunya. If we all remember the word I have used constantly in our talk, the truth and the true ibadat, कि सच्चाई के साथ इबादत करो. तो क्या कोई शख्स झूठ के साथ इबादत करता है? आप कहेंगे नहीं, नहीं करता है. What is कि सच्चाई के साथ दुनिया और दीन का काम करो. See what is true, what is permanent, what is good for your soul, and then you balance. Sometime on this very line, we have friends who have asked about the balance that Imam talks about. And they say that we are trying to balance our life between deen and dunya as per Imam Farman. I would never ever say that. This Garib and Nachis, I'm trying my best to balance the life between din and dunya, but every day I fail. Every day I fail. मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि मैं इमाम के फरमान के मुताबिक दीन और दुनिया को बैलेंस करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं रोजाना उसमें नाकाम हो जाता हूं. क्यों? 12 घंटा क्या हम अपने दीन को देते हैं? 12 घंटा क्या हम अपने मजहब को देते हैं? 12 घंटा क्या हम इमाम को देते हैं? How can we consciously and honestly say that I am balancing the life? Sometimes people, our friends, our Jamaat, unknowingly, unconsciously, and I'm going to give you a story or event or a saying between Nachis and a friend in our Jamaat Khana. All of a sudden, after reading of this Farman, the balancing of life, I noticed that this gentleman who used to come to Jamaat Khana every morning and every evening do not come to Jamaat Khana every other day. So at first I thought maybe he's busy, maybe he's sick, maybe something happened. I mean, he's the guy who has come to Jamaat Khana every day for years and years. So I asked, I said, my friend, are you okay? What happened? Is something went wrong? क्या आपके घर में सब ठीक है? आपकी तबीयत बराबर है? You know what he said? You said, you know, I heard this Farman about Mullah Baba saying to balance your life. I was coming to Jamaat Khana every day. I could not balance my life. So from now on, I take every other day off and I do watch movie. I stay with my family. I go out to eat. I'm balancing my life. Do you see danger of not understanding Farman? जब हम फरमान को नहीं समझते हैं तो हम अपने हाथों से ही अपना नुकसान कर देते हैं. He thought coming to Jamaat Khana every day was unbalanced. So he started to take every other day off and started to do a worldly thing, watching movie, being with the family, going out to eat, and he thought he was balancing his life. No,
we need to understand the फरमान first. आपने देखा कि जब मौला फरमाते हैं कि आप सच्चाई से दुनिया और दीन का काम करें, मीनिंग first understanding the truth, first understanding what is right, what is correct. अगर आपकी दुनिया 4 दिन की है और 96 डेज आपकी रूह के लिए है, तो हमको कितना काम अपनी रूह के लिए करना चाहिए और कितना काम अपनी दुनिया के लिए करना चाहिए. 4 दिन की दुनिया है, 96 डेज की आखिरत है, तो बैलेंस कहाँ है? और क्या हम 12 घंटे इमाम को देते हैं और 12 घंटे अपने जिस्म को देते हैं? कहाँ कर सकते हैं हम बैलेंस? I know, I admit कि हम बैलेंस नहीं करते हैं. तो कम से कम हम इमाम के फरमान का मजाक तो ना उड़ाएं कि मैं बैलेंस करता हूं अपनी जिंदगी को. नहीं, even if we want, we are not able to do it because we are human of habit, the creature of habit. By habit, our mind and our action are toward the physical dunya. We need to change the habit. We have to change our thought to be able to follow the Farman, understand the Farman, practice the Farman. Inshallah, I see all of you as a mu'min, as a good, righteous, Farman Bardar mu'min. Inshallah, our attention would be to follow the Farman. Not just listen, but to understand and to follow. आगे मौला फरमाते हैं, जो भी काम धंधा करो वो सच्चाई से करो, झूठ से नहीं. जो शख्स सच्चाई से काम करेगा उसकी रोटी हलाल होगी. So even your work, your business, do it with honesty. Honesty is a huge word. Is a huge word. Doing your business with honesty, it does not mean you go to work, you work 8-10 hours, but whatever you are doing, your intention, your niyat must be good and pure. We all know कि कोई भी काम नियत के बगैर नहीं है. हर काम का दारोमदार नियत पर है. Intention is a must. Your good intention is must. Before you do your work, your business, be honest with your customer, with your clients. Do not do anything which is unethical. Do not do anything which is unethical. You may be working hard, but if your business that you are conducting is unethical, then you cannot say कि मैं सच्चाई से काम करता हूं. No, हलाल की कमाई जरूरी है. अगर हमने हराम की कमाई कमाई है तो जितने भी वल्ला जितनी भी दस्तौर निकाल लेंगे, आपका माल हक नहीं होगा, सच्चा नहीं होगा. अगर आपने ईमानदारी सच्चाई की कमाई की है, फिर उसमें से दस्तौर निकालेंगे तो आपकी कमाई सच्ची होगी. वरना किसी को लूट कर, अनएथिकली कोई कमाई करके, झूठ से कमाई करके, धोखाबाजी से, जुआ खेलकर, अनएथिकली अगर आपकी कमाई आई है तो आप उसमें से जितनी भी दस्तौर निकाल लेंगे वो हलाल नहीं होने वाला है. It does not work like that. You cannot steal, cheat and earn unethically and then say, but I am paying the dastawr.
No, it does not work like that. जो झूठ और दगाबाजी से काम करेगा उसकी रोटी हराम होगी. See, this Farman is very simple in the word. Very simple in the word. हराम की रोटी खाई इसलिए उसका गोश्त हराम हुआ. इंसान हो तो वो हलाल रोटी खाए, बैठा ना रहे. Now this word, if you are a true human, इंसान, आदमी, तो आप हलाल की रोटी खाएंगे, मेहनत करेंगे, बैठकर खाना नहीं खाएंगे. यानी कि ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे आपकी कमाई हराम की हो. यानी कि ईमानदारी से, मेहनत से काम करेंगे. नाउ मेहनत भी 2-3 किस्म की है. एक फिजिकल मेहनत होती है, एक इंटेलेक्चुअल मेहनत होती है. आप देखें, लेट्स टेक सम एग्जांपल. देयर इज अ लेबर फोर्स होगा, वो अपने जिस्म की मेहनत करेगा. एक बैंकर होगा, एक लॉयर होगा, एक इंजीनियर होगा, एक डॉक्टर होगा, वो अपने इंटेलेक्ट से काम करेगा, मगर ईमानदारी से काम करेगा, वो चीट नहीं करेगा. डॉक्टर भी अगर है, लेकिन अगर वो इंसान नहीं है, डॉक्टर है मगर अच्छा आदमी नहीं है, तो वो हराम की कमाई कमाता है. एक इंजीनियर है, एक लॉयर है, यहाँ एक दुकानदार है, एक लेबर काम करने वाला है. हलाल की कमाई जरूरी है. हलाल काम करे और दगाबाजी, चीट ना करे. जो चीज खाने की है वो खाए, दूसरी नहीं खाए. मीनिंग only earn what is honestly good for you. अब वो काम करें कि जिससे आपकी कमाई हलाल की हो, और वो ही खाए, बाकी ना खाए. कम भी खाना पड़े तो भी हलाल की रोटी खाना. Even if that means you cannot eat 3 meals a day, but eat 2 meals a day, but eat good, eat honest, be honest to yourself in your work. Very simple फरमान. आगे चलते हैं. अगर किसी का पैसा किसी के पास हो तो उसके लिए खराब नियत मत करना. ये पैसा खा नहीं जाना, लेकिन उसको वापस करने की नियत रखनी चाहिए. जब सारे काम सच्चाई के होते हैं तब उसका दुनिया का और आखिरत का काम भी हलाल हो जाता है. Very, very simple word. If your niyat, your intention are pure, when you are honest to yourself and honest in earning your living, अगर आपकी नीयत सच्ची है, आपका काम सच्चा है, आपकी नीयत सच्ची है, तो ना सिर्फ ये दुनिया बल्कि आखिरत भी आपकी हलाल हो जाती है. आखिरत किस तरह से हलाल हो जाती है? क्योंकि इसके बाद आप जो भी काम करते हैं, after that whatever you do, it becomes सवाब, good deeds for you. इसके बाद आप जो भी काम करेंगे वो आपके लिए हक और हक बन जाता है. It becomes truth for you, it becomes good for you, it becomes ethical for you, it becomes beneficial for you, it becomes your good deed, because your niyat, your work, your ethics were pure and good. दीन के कामों में जरा भी गफलत ना करना. This one line, दीन के कामों में जरा भी गफलत ना करना.
Mullah did not say कि दुनिया के कामों में गफलत ना करना. Our teacher used to give us an example. Then let's say that you are late or absent in your worldly work. You can catch up and make up for it tomorrow. But if you miss one day without the remembrance of Imam, that day will never return. Every second, every minute you see on your clock pass by, that is a 1 second less, 1 minute less for you to obey the follow your Imam's Farman. That's Imam's Farman, Hazir Imam's Farman. अगर आप दुनिया के अंदर दुनिया के कामों में अगर एक दिन लेट हो जाते हैं या सुस्ती कर जाते हैं तो वो आप कल कैचअप कर लेंगे. लेकिन अगर आपने एक दिन गंवा दिया इमाम की याद से, अपनी इबादत से, फरमान बरदारी से, वो दिन कभी भी लौट कर नहीं आने वाला है. बल्कि एक सेकंड और एक मिनट के जो आप अपनी घड़ी की तरफ देखते हैं और वो पास हो रहा है, इसका मतलब है आपके पास एक सेकंड और एक मिनट कम है अब इमाम के फरमान को फॉलो करने के लिए. क्या मौला ने फरमाया? दीन के कामों में जरा भी गफलत ना करना, because that time will never return. That time is wasted, gone. Do not be lazy or ignorant toward your religion and its work. The duty of your religion toward your soul, do not be lazy or ignorant toward that. शैतान को दूर रखना. Whatever work which is not true, which is not ethical, keep it away. इंसान के रूप में आता है शैतान, इंसान के रूप में आता है. We have talked about that in our previous session. If you were not present, if you missed it, please go back and listen to our last session, last two sessions, matter of fact. शैतान इंसान के रूप में आता है. Initial शैतान will come from near you, your family member, your friend, your Jamaati member, your co-worker, someone around you. He will come in the form of a human. And he will activate your shaitan in you. The insi shaitan, the human shaitan, एक्टिवेट करता है आपके अंदर के शैतान को. वरना आपका अंदर का शैतान बेचारा क्या करेगा? आपका बाहर का जो शैतान है. So be careful who you call your family member, who you call your friend, who you call your co-worker. You have to be very careful what they are saying. Even if your family member, your friend, if they are not good for your soul, they are not truly your family member. They are not truly your friend. हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब फ्लड आया, जब तूफान आया और देखा कि उसकी बीवी और बच्चे पानी में डूब रहे हैं, तो आवाज की, या अल्लाह, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बेटा है, तू उसको बचा ले. पता है खुदावंद ताला ने क्या फरमाया? ये तेरी बीवी और तेरा बेटा नहीं है, क्योंकि ये दीन हक पर नहीं है, ये तेरे रास्ते पर नहीं है.
कौन उसका बीवी और बेटा था जो उसके साथ कश्ती निजात में बैठे हुए थे? आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त हकीकी वो है जो आपको रूहानी नुकसान ना पहुंचाए। अगर वो आपको गुनाहों की तरफ ले जाते हैं, आपको याद होगा कि पिछले सेशन में हमारी एक फ्रेंड ने एक सवाल किया इसी लाइन पर कि मैं क्या करूं, मैं घर की बहू हूं, आई एम दी डॉटर इन लॉ इन दिस फैमिली, my parents, my in-laws, my sister-in-law, my brother-in-law, whatever and whatever, my relatives, when they do gossiping, I cannot get up and leave. I have to sit there. Even though I don't like it, I have to sit there. How can you sit there knowing that they are not good for your soul? Remember, आपके भाई बहन क़यामत के दिन आपके पास नहीं होंगे। जब खुदावन ताला आपसे सवाल पूछेगा तो आपके ना तो माँ बाप, ना आपके भाई बहन, ना आपके दोस्त, on the day of the judgment, nor your parents, nor your brother and sister, nor your friends will come and help you. You are with your soul and you are responsible for your soul. आपका भाई बहन वो है जो आपको गुनाहों के अंदर ना ले जाए। अगर वो गुनाह के काम करते हैं, आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसको समझाएं या आप वहां से उठ के चले जाएं। You should be courageous enough. Believe in Imam. Tell them what is wrong, what is right. If they do not listen, then you should be courageous enough to walk away from that. જ્યાં નિંદા થાય ત્યાંથી ઉઠીને ચાલવાનું. જ્યાં નિંદા થાય ત્યાંથી ઉઠીને ચાલવાનું. He did not tell us that if they are your in-laws, then it's okay to sit there. पीर ने नहीं फरमाया कि अगर वो आपके माँ बाप या आपके भाई बहन है वो गिला गिबत करते हैं तो आपको उधर बैठना है। जहां आप निंदा है, anywhere, regardless of who they are, you must protect yourself. You protect your soul. आप अपनी रूह का ख्याल करें, उसको बचाएं और इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व ना हो, चाहे उनको कितना भी बुरा क्यों ना लगे। एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा, फिर वो समझ जाएंगे कि आप इमाम के फरमान को फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी रूह के लिए काम कर रहे हैं। आपको परवाह नहीं है कि कोई आपसे बात करता है कि नहीं करता है। उसको खराब लगेगा, वो आपसे बात नहीं करेंगे। वो तो आपके लिए अच्छा हो गया। अगर वो आपसे बात नहीं करते हैं तो फिर आगे जाकर कोई भी पंचायत, कोई भी गिला गिबत, कोई भी गॉसिपिंग नहीं होगी। That is a good thing, is not a bad thing. Anyway, let's come to this one कि इंसान के रूप में आता है, शैतान इंसान के रूप में आता है और इंसान का ईमान और माल लूट कर ले जाता है। जो शख्स मोमिन है वो सब हलाल के काम करता है, सुबह वो शाम जमात में जाता है, हर जगह हक का काम करता है, वो शराब नहीं पीता। मोमिन का फर्ज है कि दुआ पढ़े, गिनान सीखे, किसी का माल ना खाए, पराए औरत से दूर रहे, बदनज़री ना करे, कोई अपना अजीज रिश्तेदार हो या कोई और हो उसको तकलीफ ना पहुंचाए। See, those who you call your family, your friend, your well-wisher, if they were truly your family, they were truly your friend, they will never harm you.
they will never will involve you in gossiping unless you give them permission to do so. Do not give them permission to take your soul away from you, your faith, your iman, your belief away from you. Do not do that. Let me finish this paragraph and then we will stop. पराया माल ना खाएं, उसकी औलाद और माल हलाल है. किसी का माल खाएंगे और किसी पर झूठी तोहमत लगाएंगे. तोहमत, slander. Gossiping is part of the slander. You know that, right? जब हम किसी की बुराई करते हैं, that is part of your slander. One time, a Muslim, a Mu'min, shakhs came to Huzur sallallahu alaihi wasallam and said, Ya Huzur, I know a person who's doing bad deed and he's been talking bad about Islam and you. Should I tell you? You know what Prophet Muhammad told him? He said, let's say, for sake of argument, that you are right and that man is doing what you are about to tell me. If that is correct, then that is gossiping. If it's not correct, that is slandering. Regardless, they are both sin. So do not tell me anything about others. क्या फरमाया? जब वो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि एक शख्स बहुत ही बुरा शख्स है, इस्लाम के बारे में, आपके बारे में बातें करता है, बुरा भला कहता है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम सच बोल रहे हो और वो शख्स वाकईअन ऐसी बातें करता है और अगर तुम मुझे कहते हो तो ये तो उसके पीठ पीछे बुराई हो गई, गिला गिबत हो गई. और अगर तुम झूठ बोलते हो तो ये तो उस पर तोहमत हो गई. दोनों ही तरीके के अंदर, दोनों ही बातों में एक बहुत बड़ा गुनाह है और मुझे अपने साथ इस गुनाह के अंदर ना मिलाओ. What did he say? Do not involve me in your sin. I do not want it to be involved in this sin, regardless of is it gossiping or slander. आपने देखा, तोहमत वो गिला गिबात का पार्ट है. अगर आप गिला गिबत कर रहे हैं किसी की, अगर वो सच्ची है तो भी गुनाह है, झूठी है तो तोहमत है और वो भी गुनाह है. Please, please, I beg you, stay away. One of our largest enemy, the greatest enemy, is our habit of gossiping. हमारा सबसे बड़ा शैतान और दुश्मन आज हमारी ये गिला गिबत और तोहमत लगाना है. अगर आप इस एक चीज से अपने आप को पाक कर लें, आपके बहुत सारे मसाइल का हल हो जाएगा. आपकी इबादत प्योर हो जाएंगी, आपकी याद, आपकी तस्बीह, आपकी दुआ, आपकी दसौन, आपकी नियत, आपका काम, आपके बच्चे, सब कुछ पाक और पाकीज़ा हो जाएंगे. एक ये खराबी आज हमारी जमात को डुबोए हुए है. हर जगह पर, यहां तक कि जमात खाने के अंदर भी हम गिला गिबत से परहेज नहीं करते हैं. कांस्टेंट ऑन डेली बेसिस, चाहे हम फोन पर हो, चाहे हम पर्सनली बात करते हो, हम कहीं ना कहीं से किसी की बुराई को सामने लाते हैं और गिला गिबत करते हैं और बड़े ही चटकारे मारते हुए. We enjoy this gila gibat, this gossiping for some reason. Please, please, I beg you,
keep yourself away from it. So let's finish this last line. आखिरत के लिए दुआ पढ़ो, गुनान बोलो, तुम आखिरत की कमाई, ताकि तुमको आखिरत की कमाई मिले. So I'm going to stop here. So we have few minutes. If we have any question concerning this Farman or any question concerning our previous session, please do ask. Thank you so much for joining us today. It was really nice to be back and nice to see all of you. Ji. We missed you, sir. Sir, I don't see any question in the chat. Friends, if you have any questions, please unmute your device. Hello, Yani Madad. Ya Ali Madad. Thank you very much for this very, very clear session. मेरा क्वेश्चन था, अभी आपने बोला कि ये गीला गिबत की बात कर रहे थे, तो उसमें हमको दुनिया में रहना है with all the knowledge and information that we can get to make an informed decision. तो अभी किसी इंसान के या किसी शख्स के साथ हमको ट्रांजैक्शन करना होवे और उसके बारे में हमको जानना होवे कि उसके साथ हम कर सकते हैं या नहीं, वो रिलायबल है या नहीं, तो हम किसी से कुछ रेफरेंस पूछते हैं कि आपको इस शख्स का कितना नॉलेज है, तो उससे हमने वो अगर वो आदमी अपने को बता दे उसके एक्सपीरियंस और उसके जो अनुभव उसके वो आदमी के साथ है, तो वो उसके लिए गीला गिबत हो गई या कैसे हुआ? Very, very good question. I believe we had this question earlier in one of the other sessions, but this is such a great question. So let me answer. Urdu mein or English mein dono mein, because this is such a great question. That sometime when we are about to get involved in a transaction, may it be a business transaction or getting married, we go and inquiry about the boy and a girl or about the partner we are about to take home, and we ask someone. So let's take an example that someone comes to me and say, Kasam bhai, I'm about to be taking a business transaction. I'm going to make him my partner. What is your experience with Kasam bhai? How should I answer that? How I would answer that. I would say that when I was working with Kasam bhai back in whatever experience I have, I did not enjoy my working with him. It could be me, my shortcoming, that I was not able to understand him, the way he did business. I just did not enjoy working with him. But as a human, he could change. Why don't you have a conversation with him directly and bring everything in writing up front? Have an exit plan in place just in case you don't like working with him. But do your due diligence, talk to him directly, have a conversation with him, understand him better before you go into business with him. But remember, as a human, we all change. Even if I had a good experience with Kasam bhai, that was 5 years ago, 7 years ago. What about now? The Kasam bhai you are going in business with may not be same as what I found in my transaction with him. So do your due diligence and have a conversation with him. A business-minded people, a like-minded people, they sit down and they have a conversation with each other to understand each other. Ask tough question yourself. Ask tough question yourself. What if this happened? How would you react? What this happened? How I would react? What if you don't like me and I don't like you? How will we exit? Let's keep that door open. That's how I would
talk. This is my way. Instead of saying, यार वो बहुत खराब आदमी है, उसने तो मेरे पैसे लूट लिए, वो तो मेरे पैसे खा गया, उसने ये किया, इसने वो किया, and I just tell you all the bad thing he did with me. How did I converse with you? I did not like the way he conducted his business. See, there is always a good way, a proper way to talk. Let's take a second example. How many enemies of Ismailis there are? How many enemies of the Islam there are? Have you ever seen Mullah Baba talk about them? No. No. How does Mullah Baba talk about the enemy of Islam and enemy of Ismaili Tariqa? You know how he does it? He tells us, stay away from those who are the enemies of our Tariqa, of your soul, of the Islam. Stay away from them. Be careful. Watch and guard your soul. That's how he talks. You see? Yeah. There is always a two-way of talking. Yes. That's how I would conduct my business. Thank you so much. That's very good. Thank you. You're welcome. You're welcome. Very good question. Thank you. जी या अली मदद, या अली मदद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत नॉलेज मिलता है। मौला आपको सुखी सलामत आबाद रखे। आमीन आमीन. Thank you. Do we have any other question? Sir, we have a question in the chat. Friends asking, if you are sitting with someone gossiping and you divert your mind to prayers, is this acceptable if getting up is not possible? My humble opinion would be to follow the Ginan Peer Puchine Chalwanu. Peer did not say to sit there and do whatever. Peer ने क्या फरमाया? जहाँ गिला था जहाँ से उठीने चलवाना. Because not only you need to save your own soul, you need to send a signal to them too. You have an obligation to send the signal to them that what you're doing is not correct. I had given an example in one of our earlier session that how do we do this consciously without being mean or hurting someone. I'm not asking you to be mean. I'm not asking you to hurt anyone. How do we do that consciously? I'm going to give you two examples. First, something that I did, it was so crazy, lekin it worked. I have a very good friend that I used to call him every single day. After we get off from work, he would get off from work, I would get off from work, and for a few minutes, we will call each other. After hearing all this Farman, one day we had a talk, a conversation between me and him. And I told him, and he accepted, that अगर हम कभी भी किसी की बुराई करेंगे ना, तो हम अपना phone hang up कर देंगे. If you hear me talking about someone else badly, hang up the phone. And I will know what happened, and I will not hold that against you. और हमने practice की. And एक मर्तबा ऐसा हुआ, दो मर्तबा ऐसा हुआ कि as soon we will start something, we will hang up the phone. Consciously. We practice consciously. Guess what happened after that? After the two time, third time, we forgot about everybody else. We would talk about Ilm, we will talk about Farman, we will talk about our business, we'll talk about our own family, we will talk about how we're going to behave, what we're going to do. You know, जो भी, मैं घूमने गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया. We will not talk about anybody else. We will talk about ourselves. Only it took two hang up. दो मर्तबा फोन रख दिया, सीख लिया. Conscious lesson to ourselves. Second example. And I have so many examples, but this happened
just 2-3 days ago. 2-3 दिन पहले ये नाचीज़ो गरीब किसी के घर पे इनवाइटेड था. वहां पर एक कॉन्वर्सेशन हुई और उस मेरे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त ने मुझे बताया कि फला शख्स जो है ना वो अच्छा आदमी नहीं है. मैंने फौरन से उसको कहा कि अभी आपने जो मुझे बताया, व्हाट डज दैट मेक यू? अभी आपने जो किया हरकत, अब आप अपने बारे में क्या ख्याल है आपका? You know, he got jolted back. वो एकदम से खामोश हो के पीछे हो गया थोड़ा सा. Instantly he understood कि what he just said about other person, he was doing it himself. You see, without being mean or rude, आराम से हमने उसको बताया कि अभी अभी आपने जो हरकत की उसके बारे में आपका क्या ख्याल है. मैंने उसको नहीं बोला कि तुम भी तो इतने खराब हो, तुम भी तो बुरे हो, तुम भी तो ये हरकतें कर रहे हो, तुम भी तो ये गुनाह कर, नहीं, ऐसा नहीं बोला कुछ भी. आपका क्या ख्याल है? अभी अभी आपने जो काम किया उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? That's it. He understood instantly, within a second. The conversation was over. That's it. हमको कॉन्शियसली जब हम ऐसी जगह पर बैठे हो तो हमको उनको बताना है, बी नाइस, डू नॉट बी मीन, डू नॉट बी रूड. उससे बुरे अल्फाजों में बात नहीं करेंगे, अच्छे अल्फाजों में समझाएंगे कि हम ये जो कर रहे हैं क्या ये दुरुस्त है, क्या ये गिला गिबत करना हक है, जायज है, इमाम के फरमान के मुताबिक है. बस क्वेश्चन पूछे. ऐसा नहीं बोले आप तो बहुत बुरे लोग हो, आप तो गुनाह कर रहे हो. डोंट से दैट. आपने देखा कि आपके सवाल का जवाब ये है, अगर आप बैठना चाहते हैं तो आपको कॉन्शियसली उनको बताना पड़ेगा, नहीं तो आप वहां से उठ के चले जाएं, बात खत्म हो गई. क्योंकि ये तो क्लियर है, देयर इज नो इफ्स एंड बट्स. यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं है कि हम वहां पर बैठे कि नहीं बैठे. अगर बैठते हैं तो आपको कॉन्शियसली उसको दुरुस्त करना होगा. अगर नहीं बैठते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, आप उठ के चले जाएं. जी. So there's one more question. Seems like a not a complete question. So see if you can understand. If someone do ilm and zikr in daytime and sleep on the time of ibadat. Yeah, it's an incomplete question, but let's see. I think the person is asking that ilm जो हम दिन के वक्त करते हैं, is that considered इबादत? Yes. 3 किस्म की इबादत होती है, अमली इबादत, इल्मी इबादत, बैतुल ख्याल की इबादत. अमली इबादत क्या है? आप किसी की मदद करें, कोई अच्छा काम करें, टाइम एंड नॉलेज का नजराना, ये इबादत है, अमली इबादत. इल्मी इबादत, इल्म का काम करें, फरमान पढ़ना, फरमान सीखना, फरमान समझाना, फरमान समझना, गिनान वगैरह वगैरह, लेक्चर को सुनना, ये लेक्चर जो रिकॉर्डेड होते हैं उसको दोबारा सुनना, ये सब इल्मी इबादत के अंदर आता है. और इसके ऊपर याद, तस्बीह, बैतुल ख्याल की इबादत वगैरह आता है. ये सब इबादत के अंदर काउंट होता है. इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि हमारी जाने इस इमाम से फिदा हो, फरमाते हैं अगर आप रात को सोते हुए तस्बीह करते हैं, मेरा नाम लेकर सोते हैं, तो आपका सोना भी, योर स्लीप also is counted as ibadat. जी. Hello, I have a personal question. Can I ask you that?
If you like to ask personal question, I would recommend that you call It's, me personally. no, it's That would be regarding Jamaat. It's regarding Jamaat Khana, anyways. I'll tell you anyway what it is. So I do seva by giving out varas every like once a week in the morning, and I stay out with, and I can't do my bandi because you have to observe people coming in who have varas. So how do I replace that hour when I can't do my bandi? very good question. All right, so there is a khidmat which is also counted as ibadat, such as volunteer duty. Think about the volunteer that is standing outside in parking lot. Think about the volunteer which is in the shoes company, and then yourself who's giving water, correct? Yeah. All this is considered as the khidmat, and khidmat is part of the ibadat. Okay. Now, how would I do it? Not how you would do it. How would I do it? And then you can take it from there. If I was giving the wara, and only I can tell you from my experience in the Jamaat Khana I go in. There are some smart people, smart volunteers. You know what they have done? They give the wara a day ahead. वो एक दिन पहले, a day ahead, during the day they call them. They know who's coming in the morning Jamaat Khana, right? They normally know the people who comes in the morning Jamaat Khana. They will call, Kasam bhai, are you coming to Jamaat Khana today? Will you say the Ginan? Are you coming tomorrow morning? Yes. Will you say your dua? You will do this, you will do this. And they give the water during the day by calling them. Instead of standing there in the middle of the night between 4 and 5, you will not find anybody standing there. They'll all be sitting inside. They're using their intellect. And they're giving water ahead of time. You know, like you have to, like for us here in Calgary, you have to wait outside. Like you give out the varas day ahead and all that. But when they come in, you have to check them in. So that way you have to stay out. Like I said, you can definitely do that. You can definitely do what you're doing. But there is the other way. If you like to learn from others, there is a way of working around it. But it has to be your choice. If that's what you like to do, is standing outside, then it is okay. But there is a way around that other people have found. Other people have found the way around it. They do not give wara between 4 and 5. They give a wara during the daytime by calling them and saying, hey. And what they do is after 5:30, they stay outside. If someone new comes in, they will ask, hey, Malik Bhai, do you come to morning Jamaat every day? Would you like to say wara tomorrow? Would you like to say dua tomorrow? If they say yes, you write down their name for next morning. There is a way around this khidmat. You could use that if you like. So, Aziz sir, like I'm just thinking, you know, like it's pretty quiet in the morning, right? So I do my blanket then, and then when somebody opens the door, you have to make sure if that's the right person for that particular varo, right? And then I carry on, but I don't know if that is okay too. Aziz sir, या अली मदद, ये सवाल बहुत टाइम पहले अपने अभी के प्यारे हाजिर इमाम नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी को कोई वॉलंटियर्स ने पूछा था कि हम लोग बाहर ड्यूटी देते, पिकअप और ड्रॉप करते, तो हम लोग फिर बंदगी में नहीं बैठ सकते। तो खुदाविंद बोले थे कि आप लोग टर्न्स लो 30 मिनट्स की और आप बंदगी करो, बट उसमें एक्सक्यूज नहीं है। If I am mistaken, I apologize from the core of my heart. But I remember that this question was asked to our present Hazir Imam. Thank you for sharing.
Do we have any other question? I just want to have a question for the host, actually. Last those sessions, I could not get into the meeting. I don't know if there was a technical problem in the GoToMeeting. It just said that, you know, your GoToMeeting is not available since the last 2 weeks. And दूसरा है कि how do I get onto chat? I don't have a chat facilities from my phone. Is there an icon on the phone that I can use All right, for so chat? answer your first question. I was not online for last 4 weeks, but the session was on and same link was running. So I'm not sure what happened. Your second question, if you are on the phone, Yes. look to the right on top, you will Yeah. see an icon with a red dot. Yes. That's where you click to talk in the chat. Oh, okay. Okay, right. Okay, thank you so much. Yeah. Thank you. Kamini sir, do we have any other questions? Yes, No. a friend sent me a question in my private chat, so I shared it to everybody. So asking, Imam says earn the bread lawfully, but nowadays there are so many ways to make quick money. Examples, lottery, stocks, crypto, etc., which is many times is luck and speculation. Would this consider halal? This is a very tough question. So the Farman is clear. The gambling, anything that you consider and sound like in your question, you understand the difference between gambling and a business. There's a huge difference between gambling and business. Even though business also have a risk, but because you are working hard with your heart, soul, physical labor, and mind, even that there is a risk, just like gambling, but business is halal, and gambling, which is a pure gamble, meaning there is a 50-50 chance or even greater chance that you will lose money, but there is only 1 in a million, sometimes 10 million, that you will win the lotto. That is a gamble. That's a huge gambling. If gambling was halal and permittable, acceptable, then Imam would have encouraged us to do lotto and gambling. It is not, in my humble opinion, only in my humble opinion. Yeah, Then that's do that. Second, you talked about the stock market. In the stock market, which is the, if stock market is part of the investment, stock market which is part of the investment, for example, 529 account, 401k retirement account, other stock and bond investment accounts, which you do not gamble on daily basis, then that is an investment, and the money that you are investing was earned honestly, then that is an investment, and in my humble opinion, that is okay. When the income comes from that investment, you give your dasan, as your earning was halal, your investment was halal, you are not gambling, the earning comes from that investment, which is a legal earning, that is halal, and then you give your dasan, and that is okay. Anything in your heart, ask yourself. The best way to understand this is, ask yourself, if you have a 1% doubt that this gambling, the lottery, the whatever other trading that you do, if you feel for a second this is gambling, then you know the answer to your question.
that gambling is not permissible, allowed in Islam. Ji. Yalimada sir. In our Jamaat Khana, what we do in Parodiye, they keep the book with everybody's name, the Varo's name, whoever the Varo is given from starting. And so whoever comes, they have to mark their name there, right? So at 4:45, they go and check it. Their name is not marked, then they look for somebody else. They know who to look for it. But they don't stand outside for that. But at 4:45, they go and check it. That's what we do, yeah. Thank you. Thank you for sharing. Do we have any other question? No, sir, I don't see. Ji. If not, we can stop here. Inshallah, we will meet again tomorrow morning. Thank you, everybody. I miss you all for last 4 weeks. Hope all of you are doing well and you all had a very wonderful, happy, and joyous Salgira Mubarak. Thank you, everybody. Keep this Garib and Nachis in your prayers. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. Thank you, sir. Mola Ali Madad. Thank you. Ya Ali Bye, Madad. bye. Thank you so much. Yali Ya Madad. Thank you. Yali Madad. Ya Ali God Madad. bless Ya you, Ali sir. Madad. Kushali Mubarak to all. Kushali Mubarak. Ya Ali Madad. Yani Madat, excellent session. Shukr Alhamdulillah. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Shukr Wala. Shukr Mola Wala. bless you and your family, sir. Ameen. 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 Thank you.
કપડા ને કેટલી વસ્તુ મંગાવી નાઇટ ડ્રેસ ને